Today we are going to discuss about another disease, that is rubella disease. Rubella is an infectious disease which is caused by a virus, and it is a disease of mild acute fever and rashes. Okay, and it is mostly affecting children, or we can say the infants. So what is rubella? Rubella is a contagious viral disease, and it is also known as German measles. It is also known as German measles or 3-day measles. Rubella, which is very similar to the measles, but is not the same measles. It is known as German measles. Okay, it is rather an acute or a less severe disease than the measles. Okay, it is also called 3-day measles because it only lasts for 3 days. Okay, now why is and how is what is the causative agent for this rubella? Rubella is caused by a virus, as I said before. The virus name is rubella virus, and this rubella virus is a member of toga virus. Okay, toga virus is a family, and rubella virus is the member of that family, which is causing the rubella disease. Okay, how is this rubella virus transmitted in the body? It is transmitted through direct contact with an infected person, direct contact with infected person, and by the respiratory droplets from the infected person. Okay, in both of these ways, the virus can be transmitted into a healthy body, and that healthy body will now be affected with this rubella disease. The next thing which we are going to study is the incubation period. Now, we have studied what is incubation period. It is the time period when the virus enters into your body, and when it gives you the first sign or symptom. So the time period in between that time in between is known as incubation period. So incubation period for the rubella disease is 12 to 21 days. In between these days, from 12 to 21 days, you will get the sign symptoms. The third thing which we are going to study is clinical features. Clinical features are the signs and symptoms with which the patient appears in the office, in the hospital. Now, what can be the clinical features? The clinical features could be fever, throat infection, and arthralgia, myalgia, and all of these things. But remember, all of these clinical features were also present in measles. Okay, if you remember, here is the measles, and this is the clinical symptoms. You could see that you could remember that there was fever, there was this spots, and there were this mild fever and rashes and signs like that. So very similar condition, but it is not very much severe as compared to the measles. It is very mild. So the fever will be mild, the sore throat will also be mild. There will be mild arthralgia and myalgia. Arthralgia is the pain in the joints, and myalgia is the pain in the muscles. So and there will be lymph node enlargement. Okay, measles will affect the lymph node. You know what is lymph nodes? Lymph nodes are the are present in all of the body, and they are used to drain the excess water from the body. So lymph nodes are present all of the body, and they can affect the lymph node, and when they are infecting the lymph nodes will get enlarged. The last thing is mild maculopapular rash. We have studied this thing before in the measles. There the maculopapular rash were very severe, but here the maculopapular rash is mild. It is very much acute. Okay, here in this picture this is a very good picture which is showing the difference, or the comparison of the two disease, the measles and the rubella disease. Okay, in measles you can see that this was the measles appearance. In measles you can see that the rashes are very red. They are very much swelling is there, and they're very much severe. But here the rash in the rubella is little mild. It is rather an acute inflammation or acute rash. Okay, so one difference, here is the mild maculopapular rash, and here is severe maculopapular rash. One thing in the rubella disease which is very important, we should know that what is congenital rubella syndrome. Congenital rubella syndrome is the condition in the infants, in the newborn babies, which it is actually the rubella disease which they get from their mother when their mother was exposed
to rubella virus in her first trimester of the pregnancy. So this is when the baby is born with the condition. पैदाइशी ही जब बच्चे में रुबेला सिंड्रोम पाई जाए तो वो कहाँ से आती है, वो मदर से आती है, ठीक है, और पैदाइशी उसको रुबेला सिंड्रोम हो चुकी है तो उसको हम कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम बोलते हैं. ओके, now what is the most common triad of the congenital rubella syndrome? It means that what are the most common things which are found in babies with congenital rubella syndrome. मतलब बच्चों में जिनको कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम हुई होती है उनमें ये तीन चीजें पाई जाती हैं. ये बड़ी लाजमी और जरूरी खास चीजें होती हैं जो उनमें पाई जाती है और ये मस्ट पाई जाती है, ठीक है. उनमें क्या होता है, कैटरैक्ट होता है इन द आईज, हेयरिंग लॉस होती है, ठीक है, और उनमें कार्डियक डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है. कंजेनिटल कार्डिक मेल एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, ठीक है. तो ये उनमें तीन चीजें होती हैं जो कि कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम के साथ आती हैं विद देयर बर्थ. Now the next thing which we are going to study is how we diagnose this rubella syndrome. Diagnosis of this rubella syndrome is very easy. It is done by serology. IgM antibodies in neonates. जब neonates पैदा होते हैं तो उनमें पहले से IgM antibodies को चेक कर लिया जाता है, ठीक है. तो अगर IgM antibodies present हो, it means that the baby has congenital rubella syndrome. अगर नहीं पाई जाए तो मतलब ये है कि उनमें ये सिंड्रोम नहीं है, ठीक है. एंड देन यू हैव टू you can also check by doing PCR. PCR का मतलब ये है कि जो जगह आपकी रैशेस है, आपकी इन्फेक्टेड जगह है, वहां से आप सैंपल लें और उस सैंपल को लेबोरेटरी भेजकर उसका PCR टेस्ट करें और PCR टेस्ट में उनकी प्रेजेंस मालूम हो जाएगी. तो दिस इज द लेबोरेटरी टेस्टिंग. आप ये टेस्टिंग करके क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस अपनी बना सकते हैं. और ऑफ कोर्स एक चीज तो मैं यहाँ बताना भूल गया, ठीक है. द वन थिंग व्हिच आई फॉरगॉट टू राइट हियर इज द क्लिनिकल एग्जामिनेशन. वो तो लाजमी बात है ना, वो तो होनी चाहिए यहाँ पर. तो दैट इज द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है. ये आपके पास डायग्नोसिस के तरीके हो गए. वंस यू मेक द डायग्नोसिस, आपको बात कंफर्म हो जाए, यू हैव टू गो टू द ट्रीटमेंट. हाउ विल यू ट्रीट रुबेला? यू विल ट्रीट रुबेला only by doing symptomatic treatment. There is no medical treatment. रुबेला एक वायरल डिजीज है और वायरल डिजीज के खिलाफ हम एंटीबायोटिक नहीं देते, ठीक है, और एंटीवायरल भी यहाँ पर नहीं इस्तेमाल की जाती. इसके लिए कोई भी दवाई नहीं है. देयर इज नो मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर रुबेला सिंड्रोम. इट इज सेल्फ ट्रीटेबल डिजीज. ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है. ओनली एंड ओनली 3 दिन 4 दिन के लिए ये डिजीज रहती है, उसके बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है. इस दौरान अगर आपको सिम्टम्स आते हैं, आपको तकलीफ होती है, तो उन तकलीफ के लिए आप अलग अलग से दवाई ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको बुखार है तो पेनाडोल ले लीजिए, पैरासिटामोल ले लीजिए. आपको दर्द है तो कोई भी एनाल्जेसिक ले लीजिए, ठीक है. तो ये आपके पास क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगी यहाँ पर, ठीक है. देयर विल बी ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड बिकॉज इट यूजुअली रिजॉल्व्स ऑन इट्स ओन, ठीक है, और 3 दिनों में ये ठीक हो जाता है. ये तो उसकी ट्रीटमेंट है. लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको पैदाइशी हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, ठीक है. दे आर the babies are prevented by vaccinating them early in their life. Okay, उनको जिंदगी के पहले हिस्सों में, पहले सालों में ही प्रिवेंट कर लिया जाता है बाय वैक्सीनेटिंग देम. तो उनकी वैक्सीन में कौन सी वैक्सीन आती है? एक आपके पास MMR वैक्सीन आती है, ठीक है. MMR वैक्सीन में मीजल्स के खिलाफ भी एक्शन है, मम्स के खिलाफ भी है और रुबेला के खिलाफ भी है. तो ये वैक्सीन लगाई जाती है. इस वैक्सीन के थ्रू आप रुबेला जो डिजीज है उससे बचे रह सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, ठीक है. दे विल नॉट हैव the rubella disease later in their life once they are vaccinated with this MMR vaccines. और अगर किसी को already rubella syndrome हो जाए तो फिर you should avoid contact with them. You should stay away from them because वो आपको भी हो सकता है. तो these are the prevention, ठीक है. And the next thing is complication. Complication क्या होती है? Complications are the conditions in which the disease disease gets to the chronic stage, ठीक है. डिजीज बिगड़ जाए तो उसे हम कॉम्प्लिकेशन कहेंगे. रुबेला सिंड्रोम, if it gets complicated, what can it do? It can do panencephalitis, ठीक है. encephalitis is the inflammation of brain parenchyma. ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं उनकी उनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है रुबेला सिंड्रोम से, ठीक है. इट कैन डू द एक्सटेंडेड रुबेला सिंड्रोम, ठीक है, ये भी एक अलग से टॉपिक है. एंड इट कैन कॉज हेपेटोस्प्लीनोमेगेली. आपके जो लिवर है और जो स्प्लीन है उसकी इनलार्जमेंट भी कर सकता है दिस रुबेला डिजीज. ओके, सो दिस वाज वेरी इजी टॉपिक, ठीक है. आपको रुबेला समझने में बहुत आसानी होगी. रुबेला आपके पास बिल्कुल मीजल्स जैसी कहानी है, लेकिन मीजल्स में थोड़ी कंडीशन ज्यादा खराब थी और रुबेला में कंडीशन थोड़ी
माइल्ड होती है, एक्यूट होती है, ठीक है। बाकी वही चीजें होती हैं, फीवर होता है, सोर थ्रोट होगा आपको, दर्द होंगे बॉडी में, और हल्का फुल्का रैश आएगा, ठीक है। बाकी वेरी सिमिलर केस, ठीक है, बट इनका जो कॉज है वो डिफरेंट होता है। ओके जी, दिस वाज फ्रॉम टुडेज टॉपिक, एंड सी यू इन द नेक्स्ट।